My name is Singar and I am from class 7th. So today is my presentation and my presentation topic is word formations. Make a new word and what is called prefix में यूज करते हैं प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं एम और दिस। अब हम इसके साथ हम इन तीनों में से क्या यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन। तो ये एक न्यू अल्फाज बन गया। और कंपाउंड वर्ड्स मीन्स के हम मतलब के दो अल्फाज मिलकर एक अल्फाज बने, उसको उस फॉर्म को हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स। मीन्स के प्लस तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा एनी वन। ये एक हमारा न्यू अल्फाज बन गया। इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो ये हमारे पास न्यू अल्फाज बन गया। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि इसको भी हम तो मतलब कि हम दो अल्फाज बनाकर एक अल्फाज न्यू एक वर्ड्स बनाए तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं।